Welcome to our YouTube channel TMPS Online Classes. It's Deepak Tiwari, your maths teacher, here with a new video about the properties of multiplication over integers and the properties of divisions over integers as well. We have discussed about the properties of addition and subtraction over integer in our earlier video. It is the second part of the video. Let me start the video by introducing the properties of multiplication. The first property of multiplication over integer is its closure property. Suppose we have the two integers a and b. Suppose a and b are the two integers, and if we going to multiply these integers to each other, we will get a into b, which is also an integer, which should also be an इंटीजर. सो अगर a और b दो इंटीजर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर भी होगा, वो इंटीजर ही होगा. देन द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके, देन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ओवर मल्टीप्लीकेशन फॉर इंटीजर इज फॉर एनी इंटीजर a and b, for two integers a and b, if we multiplied this integer like a into b or multiplied this integer as b into a, we will get the same result. Okay, for example, if a is 2 and b is 3, then if we multiply it like this 2 into 3 or 3 into 2, we will get 6 in each cases. That's why the commutative property over multiplication is for integer would be applicable. Now the third property for multiplication is an associative property, in which suppose a b and c are three integers. If we multiply integers by associating each other like this or like this at first, okay? Now if a is multiplied to the association of b into c at first, then a and b, let me write it again. If we multiply b and c at first, then multiply it to a, then we will get the same result if we multiplied a and b with each other at first, then multiplied with c. Look with example 2 into 3 into 5. Okay, 2 into 3 into 5. In both these cases, if we multiplied b and c at first, then multiplied with a, or a and b at first multiplied by 5. And now 3 5 ja 5 3 ja 15, 6 3 2 ja 6 into 5, 15 2 ja 30, and 6 5 ja 30. Look, the associative property is applicable for the multiplication over integers. We will get the same result. Now the distributive property, if we have the three integers a, b and c, we will distribute it like that. If a is multiplied with the sum of b and c, and if we will get a. Okay, look, a is multiplied by b at first, then a multiplied by c as well first, then a into b, okay, multiplied first, then plus a into c. A would also be multiplied with c. Now if we taking an example 3 into 4 plus 5, we will get 3 into 4 plus 3 into 5. 3 4 ja 12 plus 3 5 ja 15. We will get 27. Okay, that's it, the distributive property of multiplication. Now look out the properties of division. The closure property, which is the first property, if we going to multiply the divide the two integers, say a and b. Suppose a and b are the two integers. If we will divide with each other, a is divisible by b, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a is divisible by b, तो it always not be possible that the result will be an integer. Okay, it may be possible or not. Suppose if we multiply 24 by 6, we will get 4, which is an integer. Okay, but if we multiplied 2 divided by 4, okay, 2 divided by 4, then what would be the result? The result is 1 upon 2, which is not an integer. So the closure property will be applicable, may or may not be, for division. Now the commutative property is, the commutative property for division is possible? No, the commutative property is not applicable over division of integers, because
If a and b are the two integer, if we divide a by b, we will not get the same result if we divide b by a. Taking an example, suppose 14 is divisible by 2 or 2 is divisible by 14. Okay, then it is 7, but it is not equal to 7. Okay, it is not equal to 7, so that can be 1 upon 7, so it is not applicable for the divisional property of integer. Now the associative property is also not applicable for that, because the commutative property is not applicable. Okay, one thing is more, if we multiply anything, any integer, suppose a is an any integer multiplied with a multiplied by 1, we will get the same result a. It proves the existence of identity. Here the integer 1 is the identity under multiplication. It means if for any integer a, if 1 is multiplied to that integer, we will get the same integers as well. Now again, if 0 is multiplied with any integer, suppose b is an any integer which we multiplied by 0, we will get 0 as a result. So it shows that when an integer is multiplied by 0, the result is 0 for any integer. Suppose -2 is an integer we multiplied by 0, we will get 0. Okay, and 0 is neither a positive nor a negative integer. This is all about the properties of multiplication and division. Let me take the rules for getting the sum, the addition, the subtraction, multiplication and division of integers. Now the first would be followed out by adding. Suppose we have two positive integers, suppose a and plus b are the two positive integers, we will get the positive sum इन दैट केस. ओके, पॉजिटिव सम. सपोज आपके पास दो इंटीजर है और दोनों पॉजिटिव है. सपोज 2 और 3 दो इंटीजर है और दोनों को ऐड करना है, तो वी विल गेट 3 to 5. आप देखेंगे कि दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करने पर पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा. देन द सेकेंड वन इज एडिंग टू नेगेटिव इंटीजर. सपोज आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर है, एक -2 है और एक -3 है. इनको ऐड करने पे हमेशा जो सम होगा वो नेगेटिव सम होगा. यानी नेगेटिव सम होने का मतलब है कि आपको ऐड करना है. ठीक है, ऐड तो होगा ही क्योंकि सम बोला गया है. ओके, देन 2 3 5, इसका आंसर क्या होगा 5. बट क्या होगा, नेगेटिव सम, तो इसके आगे माइनस लगा देना. ठीक है, अगर दो इंटीजर्स आपके दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसका जो सम होगा, सम तो होगा यानी ऐड होगा, और ऐड होने के बाद उसके आगे माइनस लगेगा. द थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ टू फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर. एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और एक आपका नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों का सम कैसे होगा. ओके, इस केस में 3 प्लस माइनस -2. जब आपका एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक इंटीजर नेगेटिव हो तो हमेशा क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है. ओके, सब्ट्रैक्ट होगा. देन 3 में से 2 गया, माइनस हुआ, ये हो गया 1. ओके, इन दैट केस आपको क्या फॉलो करना है कि जो भी, जब एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो आपको देखना है कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो उन दोनों इंटीजर में जो आपका नंबर बड़ा हो उसके आगे जो साइन लगा हो वो साइन यहाँ पे लगा देना है. +1 आपका आंसर होगा. ठीक है, सपोज इसी में एक एग्जांपल लेते हैं कि आपका -5 होता प्लस -2 होता. इन दैट केस ओके, लुक हेयर, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 इन न्यूमेरिकल टर्म्स. बट यहाँ पर क्या है, एक प्लस है, एक प्लस है और एक माइनस है. सपोज ये आपका -5 प्लस वो ऐड हो रहा है +2 से, तो यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, इट मीन्स कि क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. ओके, सब्ट्रैक्ट होगा. बट इस केस में क्या होगा, -5 + 2 है, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 3 हुआ. बट मैंने क्या बताया कि जो भी बड़ी नंबर होगा उस नंबर के आगे जो साइन होगा उस साइन को हम अपने रिजल्ट में लगा देंगे, दैट इज़ -3. Okay, it is the property, these are the properties we have to follow out by doing the addition of integers. Now for the subtraction of integers, we will get the same as well by subtraction 3 from 4. Okay, 3 from 4 subtract. We have an example. आपको 3 को 4 से माइनस करना है. लुक हेयर, बोथ दीज इंटीजर्स आर पॉजिटिव, तो 4 - 3 वी विल गेट 1. द सेम पॉजिटिव नंबर शुड बी. ठीक है, देन द सेकेंड वन इज 5 from 3. लुक
3 से 5 को माइनस करना है, 3 को माइनस करना है किससे, 5 को, ठीक है। तो माइनस तो होगा, चलो 5 में से 3 को माइनस कर लेते हैं, तो आंसर आया 2। बट यहाँ पर जो भी नंबर होगा, यहाँ पर जो भी नंबर है जो बड़ा है उसके आगे जो साइन होगा उस साइन को यहाँ पे आगे लगा देना, सेम एज जो एडिशन हमने किया था उनकी प्रॉपर्टीज़ के रिगार्डिंग। ओके, इफ़ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट -4 फ्रॉम 7, 7 से -4 को करना है, तो 7 से क्या माइनस करना है, क्या करना है, माइनस करना है किसको, -4 को। आपको याद रखना है कि माइनस माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, और 7 और 4 को ऐड करेंगे ये। लुक, आपको क्या करना है, कुछ टिप्स हैं कि प्लस प्लस अगर साइन है दोनों में, ओके, अगर प्लस और प्लस साइन है तो हमेशा प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। और प्लस और माइनस का साइन है हमेशा तो माइनस होगा, और माइनस या प्लस है तो हमेशा माइनस होगा, और माइनस माइनस है तो हमेशा प्लस होगा। ये आपके साइन होंगे, ठीक है, इन चीज़ों को। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि माइनस विद इन ब्रैकेट माइनस है तो क्या होना चाहिए, आपका प्लस होना चाहिए, ठीक है। इस केस को बता दो, जैसे -2 है, -2 है, देन माइनस और माइनस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, वी विल गेट 0 हेयर। नाउ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल, multiplication of integer, how will you multiply 34 and 32 like the simple one 34 into 32? But what happened when we multiplied the two negative integers? Suppose -23 and -3 are the two negative integers, then if you have to multiply this, then माइनस और माइनस, अगर एक इंटीजर के पास माइनस है और दूसरे इंटीजर के पास भी माइनस है तो मल्टीप्लाई के केस में वो साइन प्लस में आपका आंसर आएगा। और अगर एक, जैसे सेकेंड एग्जांपल, अगर -56 एंड 9 को मल्टीप्लाई करना है, देन वी हैव -56 एंड 9, इफ़ वी हैव द टू इंटीजर्स, वन इज़ नेगेटिव एंड वन इज़ पॉजिटिव, द रिजल्ट विल बी इन माइनस। तो रिजल्ट आपका क्या होगा, माइनस रिजल्ट होगा। ओके, नाउ इफ वी डिवाइड द टू पॉजिटिव इंटीजर्स वी विल फाइंड द पॉजिटिव integer as a result. For example, if 34 is divided by 2, we will get 17, which is the positive. So two positive integers when we divide, we will get the positive integer as a result. Now if the two negative integers would be divided with each other, suppose -90 divided by -10, look here, the two negative integers are divided, then the result will be in positives. Look at into here, suppose -90 is divided by -10, okay, -90 is divided by -10, we will get minus minus cancel out, we will get 9 as a result. Okay, now if one positive integer is divided by the second negative integer, the other negative integer, in this case if one positive and one negative, we will get the result as one negative. Okay, followed by these properties while doing addition, subtraction, multiplication and division, we will get the results in different cases. Now try to solve these exercises, exercise 2.1 and 2.2, and if you have any problem regarding this, you can direct call me or resolve this issue. That's it for this session. Hope you all understood the concept of addition, multiplication, division and subtraction. I'll be coming back again with the next topic to the next video. Till then, take care and bye bye.